तो हम स्टार्ट करते हैं. ये जो लेक्चर है अगेन इट्स गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज लेक्चर. ये उसी की कंटिन्यूएशन में है ये. एंड वी आर, अगर आपको याद होगा, वी आर इंटेंडिंग टू प्रूव व्हाट, वी आर इंटेंडिंग टू प्रूव दिस. एक मिनट, ठीक से बैठूंगा. Basically, we want to prove this. अपनी माइक बंद करिए. इसका ख्याल रखिए थोड़ा सा अभी, क्योंकि जो है ना ये स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे जा रही है, तो आप घर पे है तो इसका ख्याल रखिए. माइक जो है ना अगर ऑन है तो उसको. So we are intending to prove this. If X star is a locally compact host of space, B, boldface B, is its Borel sigma algebra, and mu from boldface B into 0 infinity is a regular Borel measure. Then basically want to show this, then the completion, and by completion we mean the LP completion. That means completion with respect to the LP norm. Completion of C sub C X is LP X B mu. हम ये दिखाना चाहते हैं. Where the C sub C X is the collection of all possible continuous functions on X with compact support. ठीक है. और इसके लिए अगर देखा जाए, the following result will be sufficient. If we somehow show this, मैं ये as a theorem record कर रहा हूँ. If we prove this theorem, then we'll get this. Basically, this theorem which I am going to state is sufficient to justify this assertion that this is the completion of this. और ये theorem क्या है वो देखिए आप. Let X इसमें हो. So the main target will be to prove this theorem actually. Let X star be a locally compact host of space. Locally compact host of space उसको usually ऐसे ही लिखा जाता है, LCH. Locally compact host of space, comma, boldface B, its Borel sigma algebra, and mu from boldface B and 0 infinity be a regular Borel measure, then for each f
in LP X B mu, where P is in 1 infinity, for each for each F in LP where P is in 1 infinity, and each epsilon positive there exists a G sub epsilon in C sub Cx, where C sub Cx ये मैंने कल ही आपको बताया था, this is going to be the collection of all possible continuous functions, continuous real valued functions defined on X with compact support. There exists a G sub epsilon, so this G sub epsilon is going to be a real valued continuous function defined on X with compact support. Such that मैंने कल ही आपको दिखाया था, every continuous function with compact support, it's a member of LP, and it's actually true for every P in 1 infinity. Such that the LP distance between F and G sub epsilon, it will be less than epsilon. ठीक है? So this theorem will be sufficient to prove our assertion that the completion of C sub Cx is LP X B mu. Because if you utilize this theorem properly, you can actually show that there is a sequence in C sub Cx. That means there is a sequence of continuous functions, real valued continuous functions with compact support, which converges to this F in LP norm. That means this F, it belongs to the closure of C sub Cx. But F, it could be any member of LP. So every member in LP, it belongs to the closure. So that means LP is contained in the closure of C sub X. C sub X closure is already contained in LP, so we have equality. So closure of C sub Cx will be LP. ठीक? Now LP we know by Rees-Fisher theorem, it's a complete space. And since C sub Cx is readily embedded in LP, so you can easily see that all the completion requirements are fulfilled. So indeed this LP will be a completion of this C sub Cx. Okay, so we'll be proving this. But ये है कि it's a hard nut to crack. ये directly नहीं होगा. We have to do it gradually. We have to do it in stages. First, we'll prove this result for P equal to 1. और वो भी कोई आसान नहीं है. We require some results from topology. Even the case P equal to 1 जो है ना, उसमें भी जो है ना, आप कोई, there is no direct proof. We require certain things from topology. And that is the reason we are taking these locally compact Hausdorff spaces. ठीक है? अब जो रिजल्ट मुझे टोपोलॉजी से चाहिए वो पहले वही आपको ना बता रहा हूँ कि व्हाट आई रिक्वायर. इसके लिए कुछ प्रीलिम्स हैं. मैंने पहले ही आपको बताया, हम जो है ना, हमारा टारगेट ये है, वी वांट टू प्रूव दिस थ्योरम. ठीक है? और ये जो है, ये थ्योरम को हम पहले प्रूव करेंगे फॉर P इक्वल टू 1. और वो P इक्वल टू 1 केस के लिए वी रिक्वायर सर्टेन रिजल्ट फ्रॉम टोपोलॉजी. तो पहले वही रिजल्ट को हम देख लेते हैं.
या प्रीलिम्स में ना, इसमें रिकॉर्ड करेंगे. These are some preliminary या prerequisites. प्रीरिक्विजिट्स में क्या है, हमें असल में एक रिजल्ट चाहिए फ्रॉम टोपोलॉजी. पहले वही मैं यहाँ स्टेट कर रहा हूँ. अगर किसी टाइम पे अगर आवाज़ में कोई ना, मुझे बताइएगा इमीडिएटली. अगर आवाज़ कभी ठीक से नहीं आ रही होगी तो मुझे बताइएगा. अब जो रिज़ल्ट मुझे चाहिए वो ये है. लेट x star be a locally compact host of space. LCH means locally compact host of space. Full stop. If K container in X be compact and V container in X be open with K contained in V, then there exists a continuous function f from x into 0 1. It will be a function defined on x taking values in 0 1. और ये जो फंक्शन है, it will be having a compact support with compact support, and that support, which we denote by sup, SUPPF, this will be contained in V. और इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी होंगी. Such that f at each point of V complement will be 0. Fx will be 0 for all x is in. By the way, this is needless to say, because since the support of f is contained in V, so obviously outside V this f has to be 0, and f of x, this will be equal to 1 for all x's in K. So in a way, अगर देखा जाए, ये जो function f है, it actually separates K and V complement, because V complement में जो points है वहाँ f value है 0 और K points पे f value is 1. So this f is separating these two sets, K and V complement. Now K is compact, and since you are in a host of space, compact means closed, because you are in a locally compact host of space. This space is host of also. So this K being compact is also closed, and V complement जो है, being complement of V is an open set, so it must be also closed. ठीक है. So basically this f is separating these two closed sets, and in fact this result is actually a consequence of Urysohn's lemma for locally compact host of spaces. And to prove this result, we actually require two more results. I'll be only stating those two results, but I'll give a proof for this result. ये result के लिए मैं आपको proof दूंगा, but ये मैं पहले ही बता रहा हूँ
For the proof of this result, we require 2 more results, जिनको हम खाली state करेंगे. मेरे ख्याल से ये So first let me give you a proof of this result, because we have to use this, so ethically I must give you the proof of this. अब बट ये है कि अब इसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका प्रूफ मैं नहीं दे सकता, बिकॉज अदरवाइज विल ना हम फिर इसी रास्ते से जाएंगे, फिर हमारा जो अपना है वो ऐसे ही रहेगा. To prove this, we require वो जो 2 रिजल्ट्स मुझे इसके लिए, अगेन वो जो रिजल्ट्स है दे आर फ्रॉम टोपोलॉजी, उनको हम यहाँ सिंपली एज लेमा स्टेट करेंगे. To prove this, we require the following lemmas. Lemma 1. Let, इसका स्टेटमेंट मैं खाली आपको दे रहा हूँ. Let x star be a locally compact Hausdorff space and comma करके लिखिएगा, not and. Locally compact Hausdorff space, comma K contained in X be compact and V contained in X be open with K contained in V. If this be the case, then there exists means we can find there exists an open set. There exists an open set W, और इस ओपन सेट में एक प्रॉपर्टी होगी, इसका जो क्लोजर होगा दैट विल बी कंपैक्ट. ओपन सेट W विद compact closure, such that K, which we know that is contained in V, but इस K और V के दरमियान ये W और W closure आएगा. Means जो situation है वो ऐसी होगी, K will be contained in W, W will be contained in W closure, obviously it will be contained in W closure, and W closure will be contained in V. ऐसे आप कर सकते हैं. Between K and V, you can somehow manage to create an open set W whose closure is compact, and the open set W with its closure, the sets will be between K and W. Oh, sorry, between K and V. जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, K is contained in W, W is contained in W closure, and W closure is contained in V. This is lemma 1. हमें एक और लेमा की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, इसको हम यहाँ lemma 2 रिकॉर्ड करेंगे. Again, we'll be dealing with a locally compact Hausdorff space. Hausdorff space K contained in X be compact and V contained in X be open with K contained in V, means V is containing K. Then there exists a
a continuous function. Continuous function f from x into 0 1 such that f of x will be 0 for all x's in V complement, and f of x will be equal to 1 for all x's in K. And this जो ये लेमा 2 जो आप यहाँ देख रहे हैं, this is actually the Urysohn's lemma for locally compact Hausdorff spaces. मैं आपको ये बता रहा हूँ, this lemma 2 is actually the Urysohn's lemma. Urysohn's lemma for locally compact Hausdorff spaces. Using lemma 1 and lemma 2 we can prove this theorem. जो ऊपर ये जो मैंने यहाँ ना as prerequisite list किया ना, we can prove this using lemma 1 and lemma 2. कैसे हुई मैं आपको दिखा रहा हूँ. अब पहले ये स्टेटमेंट पे आइए. यहाँ आपके पास क्या दिया है, वी हैव अ कॉम्पैक्ट सेट K एंड ओपन सेट V, and then we need to show that there exists as a continuous function. There is a natural temptation here to directly apply lemma 2. Maybe आप में से भी ये कोई शायद सोच रहा होगा क्यों. What if we directly apply lemma 2? आप lemma 2 directly apply कर सकते हैं because it is applicable. lemma 2 के लिए जो requirements है वो यहाँ fulfill हो रही है. You have a locally compact Hausdorff space, K is compact, V is open, contains K. But the problem is जो lemma 2 आपको continuous function जो offer करेगी ना, it will be a continuous function. और इसकी जो सपोर्ट है, ऑल्दो इट विल बी, हालांकि आप वो भी यू कैन नॉट क्लेम दैट दिस सपोर्ट इज कॉम्पैक्ट, बिकॉज ऊपर जो आपको चाहिए ये रिक्वायर अ फंक्शन विद कॉम्पैक्ट सपोर्ट. लेमा 2 आपको फंक्शन ऑफर करेगी बट इट मे और मे नॉट हैव इट मे और मे नॉट हैव कॉम्पैक्ट सपोर्ट. ठीक है, दैट्स नंबर 1. और दूसरी चीज़, इवन इफ द सपोर्ट इज कॉम्पैक्ट, there is no reason to expect that the support will be contained in V. जो यहाँ हम claim कर रहे हैं, support is contained in V. So directly lemma 2 आप apply नहीं कर सकते. हाँ, what if अगर आप ऐसे करेंगे, if you first use lemma 1 and then lemma 2, तो फिर यहाँ से कुछ बात बन सकती है, और in fact हम वही करेंगे. First we'll apply lemma 1 and then we'll follow this by lemma 2. मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्टली लेमा 2 आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा. प्रूफ ऑफ द मेन थ्योरम. नाउ बाय लेमा 1 देखिए क्या मिलेगा आपको. इन्वोकिंग lemma 1, we can find we can find an open set W with compact closure, such that K will be contained in W will be contained in its closure, and the closure will be contained in V. ठीक है, तो ये होगा.
अब आप क्या करिए, आप जो है ना ये सिचुएशन पे आप लेमा 1 इस्तेमाल करिए। अब सॉरी मैं फिर से गलत कह रहा हूँ। नाउ यू अप्लाई लेमा 2। लेमा 1 का इस्तेमाल हो गया, नाउ वी अप्लाई लेमा 2। लेमा 2 अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए आपको? लोकली कॉम्पैक्ट हॉस्ट ऑफ स्पेस, वो तो है ही। इसके बाद आपको चाहिए एक कॉम्पैक्ट सेट और एक ओपन सेट। ठीक, अब आप पता है क्या करेंगे, यहाँ कॉम्पैक्ट सेट की जगह आप के लेंगे, दिस विल बी द कॉम्पैक्ट सेट, और ये जो W है दिस विल बी द ओपन सेट, एंड विल यूज द लेमा सेकंड। ठीक है, मैं यही कर रहा हूँ। Now by lemma second we can find a continuous function. We can find a continuous function f from x into 0 1 such that f of x will be 0 for all x's outside the open set, और यहाँ open set की जगह आप w इस्तेमाल करें, so it will be true for all x's in w complement, and f of x will be 1 inside the compact set. कॉम्पैक्ट सेट की जगह आप यहाँ k इस्तेमाल करें। f of x will be 1 for all x's in k। ठीक है, क्लियरली एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करिए, आप पहले देखेंगे फिर आप लिखेंगे क्लियरली। You consider this set, the set of all those x's in x such that f of x is not 0. If you take a point in this set, वो जो पॉइंट है वो W कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज W कॉम्प्लीमेंट में जो भी पॉइंट्स हैं उन पे f वैल्यू 0 है, और इस सेट में जो पॉइंट्स हैं उन पे f वैल्यू नॉन ज़ीरो है। सो इफ यू टेक ए पॉइंट इन दिस, वो W कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता, और W कॉम्प्लीमेंट में नहीं होने का मतलब है कि दैट पॉइंट हैज़ टू बी इन W, सो दैट मीन्स दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ W, सो इट इज कंटेन्ड इन W, so therefore its closure will be contained in W closures. Okay, and W closure we know that it is contained in V. W closure is contained in V, and what is the closure of this set? That is the support of F. So the closure is nothing but the support of your function. So this is nothing but the support of F. तो यहाँ से कौन सी चीज़ सेटल हो रही है? The support of F is contained in V. तो ये सेटल हो रहा है, लेकिन क्या हमें बस इतना ही चाहिए या कुछ और भी चाहिए हमें? उस स्टेटमेंट को आप देखें, हमें चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, वो हो रहा है, सपोर्ट इज कंटेन्ड इन वी, लेकिन इसमें एक और चीज़ अभी आपने इंश्योर करनी है, द सपोर्ट हैज़ टू बी कम्पैक्ट। अब में से आप मुझे कोई बता सकता है ये सपोर्ट जो है अभी ये कम्पैक्ट कैसे होगी? मैं ऐसे लिखूँगा। Also since W क्लोजर के बारे में हमें पता है, क्योंकि W क्लोजर W जो है ना वो हमें लेमा 1 से मिल रहा है, और लेमा 1 में ये इंफॉर्मेशन है कि दिस W हैज़ कॉम्पैक्ट क्लोजर, सो W क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। सिंस W क्लोजर
is compact, and we know that every closed subset of a compact set is compact. ये मैंने टोपोलॉजी में आपको पढ़ाया था. Since W closure is compact, and since support F is a closed subset, because support is always closed because it's actually the closure. Closure is always closed. और यहाँ आप देख रहे हैं support being is contained in W closure. So we have a closed set living inside W closure, which is compact. So the closed set must be compact, means the support has to be compact. मैं यही लिख रहा हूँ. And since support F is a closed subset of W closure, it follows the support of F must be compact, and that proves the theorem completely. और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि that you can create a continuous function with compact support, continuous real valued function, because this F takes values in 0, 1, continuous real valued function with compact support, and that support will be contained in V, and it has these properties also. F of x will be 1 for all x's in K. ठीक है. ये तो होगा ही. Fx will be 0 for all x's in V complement because support is contained in V. तो अगर आप V से बाहर कोई पॉइंट लेंगे वो सपोर्ट में नहीं होगा, और सपोर्ट में नहीं होने का मतलब है फंक्शन वैल्यू इज 0. एंड Fx इक्वल टू 1 फॉर ऑल x's in K, वो तो यहाँ आपको एक्सप्लिसिटली मिल रहा है. Fx इक्वल टू 1 फॉर ऑल x's in K, ये एक्सप्लिसिटली मिल रहा है. Okay, so we have proved the result, and now we'll use this result to prove this result for p equal to 1. ये result अब हम prove कर सकते हैं for p equal to 1 with the help of this result. ठीक है. मैं पहले मैं state करूँगा वो result, फिर we'll prove that. You record this as a theorem. मैंने बिफोर हैंड ना ये रिजल्ट्स की मोटिवेशन आपको दी है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ. लेट एक्स स्मेल, या सॉरी आप जो यहाँ प्रिपरेशन है पहले वो करें आप. लेट एक्स बी अ लोकली कंपैक्ट Hausdorff space, boldface be its Borel sigma algebra, and mu from boldface B into 0 infinity be a regular Borel measure. Be a regular Borel measure. Full stop. If f be a point in, rather I should say a function. If f be a function in L1, L1 means integrable function, L1 x b mu, so this f is simply integrable with respect to this measure mu. F be a function in L1, then for each epsilon greater than 0 there exists
a continuous function. G sub epsilon from x and r, continuous real valued function G sub epsilon, with compact support such that the L1 distance between f and G sub epsilon will be strictly less than epsilon. That means this, such that integral over x, जो L1 distance होती है, it is mod f minus G sub epsilon raise 1. Raise 1 means nothing. D mu, this is actually the L1 distance, and this will be strictly less than epsilon. ये हम पहले अप्रूव करेंगे यहाँ. Proof. To prove this, we have to consider cases. First we'll consider a simpler case, then we'll consider the general case. To prove this, we consider cases. Case 1. In this case, we'll be examining the scenario where this f, जो हमारा integrable function है, is equal to the characteristic function of some a, and f is equal to chi sub a, where this a is a Borel set. That means it's coming from the semi-ring, because here the semi-ring is the Borel sigma algebra, where A is a Borel set with finite measure, with mu of, again I'm using mu, मैंने कल ही आपको बताया था, because mu of A लिखना चाहिए मुझे, with mu of A less than infinity. ठीक है? Mu इसलिए because this A is coming from the semi-ring, so mu and mu star will be same. So basically we are assuming that this f is a star function. F is chi sub A is measurable. Being a Borel set, it's measurable with finite measure. So means this f is actually a star function. ये केस को पहले हम एग्जामिन करेंगे व्हेन f is equal to chi sub a. ठीक है? अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि यू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ रेगुलर बोरल मेजर. मैंने कल भी ये सोच रहा था, इसीलिए मैंने पहले यहाँ ना ये बुक जो है ये ओपन करके रखी है. पहले ना आपको शायद मेरे ख्याल से, हालांकि ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई भी है, आई डोंट नो, शायद आप ये चीज़ भूल गए होंगे, तो मैं आपको लेट मी रिकॉल दिस थिंग. Lebesgue इंटीग्रल, शायद इसमें सब सेक्शंस नहीं आ रहे. एक सेकंड, रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं?
हाँ ये है डेफिनेशन. डेफिनेशन 18.4 आप देखें, जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही होगी. हाँ ये डेफिनेशन के लिए वी जस्ट रिक्वायर द टोपोलॉजिकल स्पेस टू बी अ होस्ट ऑफ स्पेस. हम लोकल होना वो लोकल कम्पैक्टनेस आप जो ले रहे हैं ना, वो असल में वो ये रेसोनेंस लेमा के लिए है वहाँ, और उसकी कुछ और इम्प्लीकेशंस है, वो कल मैं आपको बता रहा था. ये है डेफिनेशन. We say it's a regular Borel measure if it satisfies these conditions, these three conditions. Borel होने के लिए खाली पहली कंडीशन चाहिए एक्चुअली, और ये जो दो और कंडीशंस है, these are actually the regularity conditions. ठीक है. अब मैं चाहता हूँ कि कंडीशन सेकंड जो है ना वो आप देखें. If B is a Borel set, then measure of B is the infimum of measures of open supersets of B. In order to compute measure of B, you need to compute the measures of open supersets of B. और फिर उन measures का आपने infimum लेना है. ठीक है. और इसके बाद ये जो है ना कंडीशन 3, उस पे आप आइए. वहाँ आप देख रहे हैं, in order to measure an open set, you need to compute the measures of compact subsets of that open set. है ना, आप देखिए, it is sup mu of k, where k is a compact subset of O. So basically you need to measure compact subsets of O, और उन measures का sup आपने लेना है. Thereby you'll get the measure of the open set. अब ये देखिए यहाँ एक ये, हालांकि मैंने शायद आपको ये बताया भी होगा. In order to measure a Borel set, you need to measure its open supersets. So basically now it comes to open sets. Borel set को अगर आप measure करना चाहिए, you need to measure its open supersets. So you need to measure open sets. और open sets को आप कैसे measure करते हैं? Using compact sets. So basically it all boils down to measuring compact sets. ठीक है. We'll make use of this. कि हाँ एक और चीज़ है, ये वो शायद मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई होगी. अब जो है ना, वी वांट टू यूज़ दी, जो हमने वो ऊपर जो रिजल्ट लिस्ट किया था ना एज अ प्री रिक्विजिट, हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं. आई वांट टू मेक यूज़ ऑफ दिस रिजल्ट, बट द प्रॉब्लम इज़, in order to use this result, I must possess a K, a compact set, and a V, an open set. है ना, ये रिजल्ट आप तब अप्लाई कर सकते हैं when you possess a compact set K and an open set V containing the compact set K. अब अभी जो हमारे पास जो सिचुएशन है, वहाँ पास हमारे पास एक बोरल सेट है. ठीक, अब ये देखेंगे आप, ये कंपैक्ट और ओपन यहाँ मैं कैसे इन्वॉल्व कर रहा हूँ. Let epsilon greater than 0 be prescribed. Only it is given, epsilon is given. Full stop. Then clearly mu of age है, this is यहाँ आप लेंगे mu of a minus epsilon by 2. This is clearly mu of a is the infimum, and I must disturb the infimum status, so I must take mu of a plus, exactly, I must take mu of a plus epsilon by 2. This is clearly greater than mu of a, right? Because mu of a is a finite quantity and epsilon is positive, so this is clearly greater than mu of a. Now what is mu of a? अभी आप देख रहे थे, it is, ये देखिए property second, because a is a Borel set, so mu of a को आप ऐसे देख सकते, it's infimum. Infimum means the greatest
lower bound. Now that आप देख रहे हैं कि this quantity is greater than the greatest lower bound, so that means this quantity cannot be a lower bound. That means there must be an open superset of A whose measure is strictly less than this. ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ ऐसा, and therefore इसको ऊपर वाली लाइन में ही लिखिए, then के बाद ही लिखिएगा, then this is less than this, and therefore we can find an open set V containing A such that the measure of V will be strictly less than mu of A plus epsilon by 2. ये वो इन्फिमम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं ये ऑब्टेन कर रहा हूँ, फुल स्टॉप. या आप इसको कोई लेबल असाइन करिएगा, लेट्स कॉल इट स्टार. ओके, so now I have got an open set V is an open set. अब now and I need to create a compact set. वो compact set के लिए हम एक, हालांकि मैं यहाँ वो सिचुएशन पहले क्रिएट कर सकता हूँ और मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट वो जो है ना, ये प्रूफ को थोड़ा सा ना इसमें फिर ये बढ़ जाएगा, इसमें आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ऑलरेडी लेंथी प्रूफ है, मैं वो नहीं चाहता हूँ. तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक रेडीमेड रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, और मैं वहाँ वो आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा रिजल्ट हम जो है, हम इसमें कौन सा रिजल्ट है, ये शायद इस्तेमाल हो सकता है. Will make use of lemma 8.5. It states that if B is a Borel set, है ना, आप देखिए क्या है ये जो B आप यहाँ देख रहे हैं, इसके बारे में दिया गया है कि it's a Borel set with finite measure. So this result is applicable to Borel sets. और आपको क्या बताया गया है यहाँ पर, in order to compute measure of a Borel set, you need to compute measures of its compact subsets, and then you need to take the sup of those. So you can see this mu of B as sup of this. Don't confuse this conclusion of lemma 18.5 with the third requirement. ये जो third requirement है, हालांकि वहाँ भी right side में जो आप देख रहे होंगे it is sup, लेकिन मसला वहाँ है कि वहाँ जो set आप O देख रहे हैं, it's an open set. Basically ये जो 18.5 है ना, it tells us that this 3 जो condition 3 है, it is not just true for open sets, it's actually true for Borel sets, but the condition is the measure of the Borel set should be finite. बाकी वही है, so mu of k is a compact subset, यहाँ भी वही है, बट मसला वहाँ है वो कंडीशन 3 में जो लेफ्ट साइड में जो सेट है O, इट्स एन ओपन सेट, और यहाँ जो लेमा 18.5 में जो लेफ्ट साइड में जो आप जो सेट देख रहे हैं ना, जिस पे म्यू लगा है, इट्स अ बोरल सेट. तो डायरेक्टली वो थर्ड कंडीशन इस्तेमाल नहीं हो सकती. और ये वही है जो मैं आपसे पहले ही कह रहा था, in order to measure a Borel set you need to measure open sets, but in order to measure open sets you need to measure compact sets. So basically it all boils down to measuring compact subsets, और वही बताया गया है यहाँ 18.5 में. So it's a reasonable result, हम इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे. So I can now see this mu of A as sup also. अब हम इसका sup status डिस्टर्ब करेंगे. Again, since mu of A ऐसे लिखिएगा आप, mu of A minus epsilon by 2 is strictly less than mu of A. Obviously mu of A is a finite quantity, so it will be strictly less than mu of A. It follows, now mu of A is sup. Sup means least upper bound. Now this quantity is strictly less than least upper bound, so means it cannot be an upper bound. So means there must be a measure which is greater than this. और वो जो measures है वो आ रहे हैं from compact subset. So means there must be a compact subset of A. It follows
we can find a compact subset K contained in A such that the measure of K will be strictly greater than measure of A minus epsilon by 2. ठीक है, इसे आप लेबल करिएगा डबल स्टार. ठीक है, ओके. अब वो सिचुएशन आ गई जहाँ वो प्री रिक्विजिट वाला रिजल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अब देखिए क्या सिनेरियो है यहाँ. K is compact and K is contained in A and A is contained in V, so means K is contained in V, so we can use that result. ठीक है, अब कोई नाम उसको दीजिएगा वो थियरम को. We call it theorem A. आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, मैं इसको नाम दे रहा हूँ theorem A. Now I can make use of this theorem A. बस इसके लिए जो चाहिए था वो आ गया मेरे पास. I have a compact set K which is contained in an open set V. क्या लिखा था आपने इससे पहले? हाँ ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप. नाउ बाय थियरम A, जो ऊपर आप देख रहे हैं, we can find a continuous function, a continuous function. और उसी जो कंटिन्यूस फंक्शन हमें थियरम ए ऑफर कर रही है ना, उसको हम नाम देंगे जी सब एप्सिलॉन. और ये कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम x to 0 1. और इस कंटिन्यूस फंक्शन की जो सपोर्ट होगी दैट विल बी कंपैक्ट विद कंपैक्ट सपोर्ट. ये आप समझ रहे हैं, ये कंपैक्ट सपोर्ट पर हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इट इज दिस कंपैक्ट सपोर्ट विच एंश्योर्स इंटीग्रेबिलिटी. अदरवाइज कंटिन्यूस फंक्शंस आर ऑफ नो यूज टू अस, because we are interested in integrability. Without compact support you cannot claim integrability, so this is the reason we stress on this compact support. With compact support, जिसको हम इससे denote करते हैं SO G sub epsilon, and this compact support we know that from theorem A it will be contained in V. With compact support this contained in V such that this function G sub epsilon, when evaluated at a point of K, it always returns 1. It's equal to 1 for all x's in K. मैं वो नहीं लिख रहा हूँ G sub x is 0 for all x's in V complement, because that is obvious, because if the support is contained in V, so outside V function has to be 0. For all x's in K. ठीक है. Clearly this G sub epsilon be a continuous function with compact support is integrable. Clearly G sub epsilon being a continuous function with compact support is integrable. It is an integrable function. Full stop.
ऑब्जर्व दैट, ये आप है ना, आप नोट करेंगे, ऑब्जर्व दैट if you take the modulus of, ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल है यहाँ, because basically we need to show that the L1 distance between G sub epsilon and F is less than epsilon. ठीक है, बेसिक एम वही है. मैं आपसे अब आपको कह रहा हूँ कि आप इसे देखिए, यू कंसिडर दिस, कंसिडर modulus G sub epsilon minus chi sub A, and remember this, that chi sub A is actually F. मैं आपसे कह रहा हूँ कि that this will be less than or equal chi sub V, मतलब the characteristic function of the open set V minus the characteristic function of the compact set K. ये होगा. क्या आप इसको देख सकते हैं कैसे? हालांकि ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ना ये आप पर नहीं छोड़ सकता, मुझे खुद ही आपको बताना होगा कैसे. इसको देखने का एक तरीका है, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो अदरवाइज यू विल रन इनटू प्रॉब्लम्स. आप क्या करिए, लेट्स सपोज दिस इज x, ठीक, लेट्स सपोज दिस इज बेसिकली मुझे ये जो v है, बिकॉज v इज एन ओपन सेट, तो आइडियली इट शुड बी डॉटेड. ये मेरा x है, लेट्स सपोज दिस इज माय v, इसके अंदर लेट्स सपोज दिस इज a कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया. ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है. मैं इसमें थोड़ी सी बाउंड्री जो अटैच कर रहा हूँ और कुछ बाउंड्री पॉइंट्स बाहर रख रहा हूँ. तो दिस इज v, दिस इज a, और a के अंदर है k. इसके अंदर है यहाँ पार्ट k. ठीक, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि दिस इज ट्रू. अब इसको देखने का जो तरीका है ना, वो ये है कि हम क्या करेंगे, हम इस इनइक्वालिटी को टेस्ट करेंगे एट ईच पॉइंट ऑफ x. हम x से एक पॉइंट लेंगे और इस इनइक्वालिटी को टेस्ट करेंगे. अब वो पॉइंट जो है, या तो वो यहाँ से आएगा, मतलब v के बाहर से पॉइंट आ रहा है. अब अगर v के बाहर से पॉइंट आ रहा है, what will be g sub epsilon at that point? Remember that g sub epsilon की जो सपोर्ट है वो v में है, तो मीन g sub epsilon वहाँ 0 होगा. So this will be 0. chi sub a already will be 0 because a जो है वो v के अंदर है. So ये भी 0 होगा. So left side will be 0. What about the right side? Obviously right side भी 0 होगा because chi sub v और chi sub k दोनों 0 होंगे इस पॉइंट पे, अगर आप x यहाँ ले रहे हैं. ठीक, अगर आप x यहाँ लेंगे, if you take x inside k, इस केस में देखिए क्या होगा. x is inside k, तो मीन्स वो v में भी है और k में भी. सो दैट मीन्स ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा. सो देयरफॉर इनकी जो डिफरेंस है वो 0 होगी. सो इस केस में जो राइट साइड है इट विल बी 0. व्हाट अबाउट द लेफ्ट साइड? आपको पता है k के अंदर जो g है इट इज़ 1, सो दिस विल बी 1, और दिस बीइंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a एंड k इज कंटेन्ड इन a, सो ये भी 1 होगा. सो अगेन इट विल बी 1 minus 1. 1 minus 1 इज 0. सो अगेन लेफ्ट साइड इज इक्वल राइट साइड. ठीक, अब बस दो टेरिटरीज रहेगी, एक तो ये रिंग शेप रीजन और ये. पहले आप यहाँ आप x लीजिए. इफ x इज हेयर, अगर x यहाँ है, व्हाट विल बी द राइट साइड? अब मैं ये वाली सिचुएशन एग्जामिन कर रहा हूँ. x इज हेयर, तो ये जो है इट विल बी 1. व्हाट अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन k?
क्योंकि x k में नहीं है इस टाइम, तो इट विल बी 0. सो राइट साइड विल बी 1 minus 0, दैट इज 1. सो राइट साइड विल बी 1. व्हाट अबाउट द लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं काई सब a, क्योंकि जो x है वो अभी यहाँ है, वो दैट मीन्स a में नहीं है, सो दिस विल बी 0. और ये जो g है, इट टेक्स वैल्यूज इन 0 एंड 0 to 1. सो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? वो 1 तक जा सकता है, बिकॉज वो देखिए आप g जो है ना, g सब एप्सिलॉन, इट टेक्स वैल्यूज इन 0 1. So it cannot exceed 1. Right side is 1. So again we have left side less or equal to right side. So inequality is true. और similarly अब मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ. If x is here, यहाँ भी inequality जो है it will be true. ठीक है? That's also obvious. ये कुछ ज़्यादा इसमें कोई rocket science नहीं है. You can easily see this. So this is true. ये जो मैं लिख रहा हूँ, this is true. Now we'll make use of this. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. और thus अगर आप इसे आप देखेंगे, इंटीग्रल ओवर x mod f minus g sub epsilon d mu, which is actually the LP distance, L1 distance between f and g sub epsilon. This will be equal to integral over x mod f is chi sub a in this case, so it will be chi sub a minus g sub epsilon d mu. और ऊपर आप देख रहे हैं modulus of g sub epsilon minus chi sub a, it is less than or equal to this. So using the monotonicity of the integral, it will be less than or equal integral over x chi sub v minus chi sub k d mu. Using the additivity of the integral, this will be what? This will be equal to integral over x chi sub v d mu minus integral over x chi sub k d mu. Right? Now what is integral over x chi sub v? It will be the measure of v. Right? And similarly, what will be integral over x chi sub k? It will be measure of k. Right? So this is measure of v minus measure of k. ठीक है? अब यहाँ जो है हम स्टार और डबल स्टार का इस्तेमाल करेंगे. वो देखिए आप, what is star? Star says that measure of v is strictly less than measure of a plus epsilon by 2. अब यहाँ measure v है, so it will be strictly less than, वहाँ ये उसका इस्तेमाल करेंगे. और डबल स्टार को देखिए, डबल स्टार जो है, it says measure of k is greater than, so minus times measure k will be less than. Less than what? It will be less than epsilon by 2 minus measure of a. मैं यहाँ जो है ना -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ on both sides, क्योंकि वहाँ जो है ना मेरा है माइनस मेजर के. तो ये इस्तेमाल करके क्या मिलेगा आपको? दिस विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन बाय, माइनस है कि प्लस, सॉरी ये पहले देख लेते हैं हम, ये प्लस होना चाहिए वहाँ एक्चुअली. स्टार से जो है ना, हाँ स्टार से प्लस है. म्यू ऑफ ई इज स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू ऑफ वी इज स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन बाय 2. और यहाँ क्या होगा? यहाँ भी प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आएगा जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, म्यू ऑफ ए माइनस साइन के साथ आएगा. सो इट विल बी दिस प्लस एप्सिलॉन बाय 2 देन प्लस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस म्यू ऑफ ए. और म्यू ऑफ ए कैंसिल होगा. एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज एप्सिलॉन. ठीक. और यहाँ मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? या ऊपर मैंने स्टार और डबल स्टार का इस्तेमाल किया.
आप देख लीजिएगा। इन केस अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे तो अगर आप फिर से इसको देखेंगे, दिस इज एक्चुअली दिस फॉलोज बाय यूजिंग स्टार एंड डबल स्टार। स्टार और डबल स्टार का इस्तेमाल करके आपको ये मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सो व्हाट वी हैव, this is strictly less than this, so means the result is true in this case. ठीक है, so we have proved the result for this case when f is chi sub a, where a is a Borel set. Now we'll take up the general case. Case 2. Case 2 will be the general case. ये जनरल केस को कैसे करेंगे आप? यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले वो कल जो रिज़ल्ट मैंने आपको ना एज एक्सरसाइज दिया था, जहाँ मैंने आपको दिखाया था वो स्पेशल स्टफ फंक्शन से भी आप ना किसी भी इंटीग्रेबल फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं टू एनी डिग्री ऑफ क्लोजनेस, पहले मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। Let f be an integrable function, means f is in L1. मैं वही लिखूंगा, instead of writing f is an integrable function, I'll simply write that f is in L1. Let f be in L1. X be mu. Then या और हाँ सॉरी, कुछ पहले मुझे लिखना चाहिए, in L1 and epsilon greater than 0 be given. Then by a previous result, मैं वही रिजल्ट जो मैं कल आपको एक्सरसाइज दिया था वही उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। by a previous result we can find a special stuff function, a special stuff function phi equal summation I runs from 1 to n ai chi sub ai. Now this is a special stuff function, so ये जो level sets आप यहाँ देख रहे हैं capital AIs, they will be coming from the semi-ring, means the Borel sigma algebra. We can find a special stuff function, this where, और मैं यहाँ मान रहा हूँ कि that this is the standard representation. Standard representation means these little AIs will be non-zero and distinct, where little AIs are the non-zero distinct values of phi, and AIs जो है are pairwise disjoint Borel sets coming from semi-ring. Borel sets means coming from semi-ring. In fact, मैं वही लिखना चाहता हूँ. I want to mention that they are coming from the semi-ring, but semi-ring is the Borel sigma algebra, so I am saying that they are Borel sets with finite measure. With finite measure
मैं सेंटेंस ख़त्म नहीं कर सकता बिकॉज ये अभी इनकम्प्लीट है. विद फाइनाइट मेजर such that the distance, you can approximate this f by a special step function to any degree of closeness. So in particular you can achieve epsilon by 2 degree of closeness. So that means the L1 distance between f and phi, it will be strictly less than, और मैं L1 डिस्टेंस लिख रहा हूँ तो आई शुड राइट लाइक दिस, इंटीग्रल ओवर x f माइनस phi d mu. f minus phi d mu, this will be strictly less than epsilon by 2. ठीक है, आप इसको कोई लेबल दीजिए, कॉल इट फर्स्ट. ओके, इसके बाद now by case 1, हमने केस 1 में देखा द थियरम इज ट्रू फॉर विच फंक्शंस. द थियरम इज ट्रू फॉर फंक्शंस ऑफ दिस फॉर्म chi sub a, where a is a Borel set. So in particular it will be true for chi sub a sub I, where a sub i's are the level sets which you see in the representation of phi, and since these level sets are Borel sets with finite measure, so theorem will be true for these functions by case 1. तो हमें क्या मिलेगा if we use case 1? और in fact आपको वो case 1 जो है ना, you have to use case 1 n times because there will be n such characteristic functions, because जो I है ना वो standard representation में it runs from 1 to n. ये देखिए, I runs from 1 to n chi sub a sub I. So there will be n such characteristic functions chi sub a sub I, और हर एक characteristic function पर आप case 1 apply करेंगे because it's true. अब by case 1 comma for each I equal to 1 to so on up to n, we can find, so case 1 जो है ना, it will offer you n continuous functions with compact support. मैं ये यहाँ जो है ना, ये जो चीज़ है ना, ये compactly लिखूँगा, ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ. अब देखिएगा कैसे लिखेंगे हम. We can find a continuous function, a continuous function g sub I from x into 0 1 with compact support such that the L1 distance, which is integral over x g sub I minus chi sub a sub I mod d mu, this you can make this distance as small as you please. So in particular you can make it less than epsilon by, ये देखिएगा कि मैं क्या ले रहा हूँ, epsilon by twice n times ये इस तरह का ये लेने का रीज़न जो है ना, थोड़ी देर में आपको समझ आएगा. एक मिनट, हैंग हो गया. एप्सिलॉन बाय ट्वाइस n टाइम्स मॉडुलस ऑफ लिटिल a sub I. ये आप कर सकते हैं. इसे आप रखिएगा सेकंड.
आपने केस 1 को अप्लाई करना है n टाइम्स, और मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ, अगर आपने नोटिस किया होगा मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ फॉर ईच i फ्रॉम 1 to n, तो वट एवर आई एम सेइंग इज एक्चुअली ट्रू फॉर ईच सच वैल्यू ऑफ i। तो ये होगा। अब आप क्या करिए, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज g sub epsilon in this case. So let g sub epsilon be equal to a1 times g1 plus a2 times g2 plus so on plus an times gn। ये जो जी आईज आपको यहाँ मिल रहे हैं ना, इन्हीं का इस्तेमाल करना है, एंड वी हैव टू क्रिएट दिस लीनियर कम्बिनेशन। देन क्लियरली दिस बीइंग अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, finite linear combination of a continuous functions is a continuous function, and since these continuous functions have a compact support, तो ये जो g sub epsilon है इसकी भी compact support ही होगी। ठीक है, then this g sub epsilon is a continuous function from x into R with compact support, because it's a finite linear combination of continuous functions with compact support, so it will be a continuous function with compact support. Support such that, now if you examine this integral over x mod f minus g sub epsilon d mu, if you examine this, in the first place you can write this as integral over x mod f minus phi plus phi minus g sub epsilon d mu, है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यू विल यूज दी min cos case inequality for p equal to 1, which is actually the triangle inequality, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। This will be less than or equal integral over x mod f minus phi d mu plus integral over x mod phi minus g sub epsilon d mu। ठीक है, नाउ एज फार एज दिस इंटीग्रल इज कंसर्न्ड, इसके लिए हमारे पास एक एस्टिमेट है, वी नो दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, उसको हमने फर्स्ट रखा था। ठीक है, आप सुन रहे हैं मुझे, क्योंकि लैग हो रहा है, मुझे नहीं पता आपको आवाज़ आ रही है या नहीं। यस सर। फिर ठीक है, स्ट्रीमिंग में शायद इशू होगा, बट अब यहाँ जब आप फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे, जो पहला इंटीग्रल है, इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, so this will be strictly less than epsilon by 2, प्लस दूसरे इंटीग्रल में हम थोड़ी सी मॉडरेशन करेंगे, फिर उसमें हम सेकंड का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली। अब ये जो है ना, इन द फर्स्ट प्लेस ये जो फी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो इसकी ना वो समेशन फॉर्म है। आई कैन राइट दिस एज समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n ai chi sub ai chi sub ai।
तो ये आ गया आपका फ़ी, और उसके बाद वही हम माइनस जी सब एप्सिलन। जी सब एप्सिलन जिस तरह से हमने लिखा है ना, उसको मैं समेशन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और समेशन फॉर्म में अगर आप लिखेंगे इट विल बी समेशन I running from 1 to n ai g sub I mod d mu। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे अब, या पहले ये दो समेशंस को कंबाइन करिए और यहाँ ए आई कॉमन आ सकता है। सो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलन बाई 2 प्लस इंटीग्रल और x मॉड समेशन में दो समेशंस कॉमन कंबाइन कर रहा हूँ अब, समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n। Now what is this? This will be ai times chi sub ai minus g sub I mod d mu। ठीक है, now this is modulus of sum, so by triangle inequality it will be less than or equal to sum of moduli, and then you will use additivity of the integral and you have to use second। और जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे आप देखेंगे ये जो दूसरा इंटीग्रल है दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलन बाई 2। मैं मेरे ख्याल से ना एक और पेज, यहाँ मैं नया पेज स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। मुझे ये ज़बानी याद है तो मैं वो लिख सकता हूँ वहाँ। वहाँ जो लेफ़्ट साइड में था हमारा वो ये था इंटीग्रल और x मॉड f माइनस जी सब एप्सिलन डी म्यू। ठीक, और वो इनइक्वालिटी जो अभी हम अब देख रहे थे उसमें हमने अब हमारा जो स्टेटस है वो भी ये है कि हमने देखा कि स्ट्रिक्ट लेस देन एप्सिलन बाई 2, वो पहला इंटीग्रल आया था ना लेस देन एप्सिलन बाई 2, एंड देन प्लस वी हैव दिस इंटीग्रल ओवर x मॉड समेशन I runs from 1 to n ai times chi sub ai minus g sub I mod d mu। Now this will be less than or equal to epsilon by 2 ऐसे ही प्लस इंटीग्रल, यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस्तेमाल करेंगे, it will be integral over x summation I runs from 1 to n because this is modulus of sum, so it will be less than or equal to sum of moduli, so it will be mod ai times mod chi sub ai minus g sub I d mu। ठीक है, now यहाँ आप एडिटिविटी इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रल की, so integral of sum will be sum of the integral, so it will be equal to epsilon by 2 plus summation I runs from 1 to n, then what, integral over x mod ai times modulus of chi sub ai minus g sub I d mu। ठीक है, mod ai is a constant, तो ये is a scalar, ये इंटीग्रल से बाहर आएगा, so this will be equal to epsilon by 2 plus summation I runs from 1 to n mod ai times integral over x mod chi sub ai minus g sub I d mu। अब ये जो इंटीग्रल है इसके लिए हमारे पास दीज आर एक्चुअली n इंटीग्रल्स I runs from 1 to n, और हर एक इंटीग्रल के लिए हमारे पास एक एस्टिमेट अवेलेबल है, वो आप वहाँ वो सेकंड को देखिए, ये देखिए इंटीग्रल ओवर x mod gi minus chi sub ai d mu is strictly less than epsilon by twice n times
2n टाइम्स मॉड AI. ठीक है, सेकंड का इस्तेमाल मैं वहाँ कर रहा हूँ. So it will be what? It will be strictly less than epsilon by 2 plus summation I runs from 1 to n mod AI times epsilon by twice क्या है, twice n, and then we have mod AI. अब mod AI कैंसिल होगा बिकॉज दीज आर नॉन जीरो नंबर्स. वो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के स्केलर्स है ये. तो दिस इज एप्सिलॉन बाई 2 और आप इसको ऐड कर रहे हैं n टाइम्स, so it will be it is epsilon by 2n added to itself n times, so it will be actually n times epsilon by 2n, n cancels, so it will be epsilon by 2. और यहाँ ऑलरेडी एक epsilon by है, ऑलरेडी एक epsilon by 2 है, so कुल मिला के it will be epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is equal to epsilon, and that proves the theorem. ठीक है. अब है इसका वो जनरल केस होना, चूँकि अभी अब ऑलरेडी बहुत देर हो गई है. अब मैं आपको ना वो ये एक दफ़ा वो दिखा देता हूँ, वो रिज़ल्ट कहाँ मिलेगा आपको. इट इज़ ऑन पेज नंबर 262. सो आई राइट 272. ये पेज 262 आप देखिए, थ्योरम 31.11. अब बेसिकली ये जो रिजल्ट है ना 31.11, वी हैव प्रूव्ड दिस फॉर p इक्वल टू 1. नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन दैट इट इज ट्रू फॉर p इक्वल टू 1 विल प्रूव दिस जनरल केस where p lies between 1 and infinity, greater or equal to 1, less than infinity. आप इसको देख लीजिए, इसको पढ़ के आएंगे आपका. मैं खुद ही दिखाऊंगा प्रूफ, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा देख के आइएगा. आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे. ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ना टॉपिक था, हालांकि ये बहुत लेंथी है. ये इसमें जो कंटेंट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट्स है, बट जो इसकी इम्पोर्टेंस है हम ना यहाँ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे. मैंने ये स्ट्रीमिंग स्टॉप कर रहा हूँ.